different types of price elasticity of demand, right? So types of price elasticity demand means, because we are discussing about the degree of responsiveness or magnitude. So it cannot be same for all type of product or all kind of changes in price. So in which regard or in which condition the demand rises according to price, sometime maybe at a higher magnitude, or maybe at some time even when price is changing a lot, demand is not changing, right? So how much and when? So according to the degree of responsiveness, so price elasticity of demand can be studied as 5 types, right? 5 variants. That is, first is, yes, relatively elastic or elastic demand. When it happens, yes, anyone? ऐसे ठीक है, हम अभी फॉर्मूला डायग्राम वो सब तो छोड़ो. सो इलास्टिक, जब अगर बोलेंगे बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी है, इलास्टिक है, मतलब क्या है? इलास्टिक ज्यादा है, इसका मतलब आप अगर थोड़ा सा भी खींचोगे ज्यादा दूर जाएगा. हाईली इलास्टिक होने से ही होगा. दैट मीन्स व्हेन प्राइस चेंजेस लिटिल बिट and the change or the response will be higher. When the response is higher to the change, that means highly elastic, right? मैं लेमन लैंग्वेज में बोल रही हूँ. इलास्टिक, प्राइस इलास्टिसिटी, डिमांड वो सब छोड़ो, राइट? हम अगर बोले कि एक मेरे पास एक रबड़ है और एक हेयरबैंड है और या फिर एक गुलेल है, ज्यादा रेस्पॉन्सिव है, दैट मीन्स थोड़ा सा हम खींचेंगे ज्यादा दूर तक जाएगा. सेम हियर कि व्हेन price changes even for a little bit, maybe 5%, there is a 5% change in the price, and the degree of responsiveness कितना हो रहा है? There is 20% change in the demand. That means 5% of price change can lead to a change in demand up to 20%, right? So that means it is highly elastic, right? Highly elastic or इलास्टिक और हाईली इलास्टिक और इलास्टिक, और आप बोल सकते हो इसको रिलेटिवली इलास्टिक. व्हाई रिलेटिवली इलास्टिक? बिकॉज वी आर कंपेयरिंग विथ किसी और से ज्यादा इलास्टिक है, राइट? इफ वी आर सेइंग दैट इट इज हाईली इलास्टिक or elastic, that means it is elastic, it is more elastic than something else. So you can also regard it as elastic और हाईली इलास्टिक और इलास्टिक डिमांड. सो एग्जांपल हम दे सकते हैं कि व्हेन देयर इज एफएमसीजी गुड में, इन एफएमसीजी गुड और मोनोपोलिस्टिक गुड्स, राइट? मोनोपोलिस्टिक गुड, और दैट मीन्स सो प्रोडक्ट व्हिच हैव many competitors or many substitutes, right? So what happened कि even a minor change in price lead to a high demand, राइट? जैसे हमने एग्जांपल दिया था, इफ देयर इज ए 2 रुपी चेंज और 2 रुपीज डिक्रीज इन किटकैट, राइट? किटकैट के साथ 2 मिल्की बार इज फ्री, मिल्की बार का 2 टॉफी फ्री है, एंड वी वुड लाइक टू बाय KitKat instead of Dairy Milk. Why? Because you are getting 2 free. मतलब 2 rupees decrease in a KitKat has led to a higher increase in demand, right? That means highly elastic. Or many times, अगर product which doesn't have much competitors or much substitute, in such product what happen? So even if price increases, demand doesn't decrease that much, right? जैसे हमने एग्जांपल दिया था, like iOS ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ही फोन है, right? That is iPhone. So people who are whose taste and preference or who is loyal to using iOS software, iOS operating system, right? They don't have any other option other than to buy an iPhone. So in such cases also you can see that when price increases, demand decreases definitely, but doesn't decrease at the same rate as the increase in the price. अगर 20% increase in the price is not necessarily कि 20% का ही होगा. There is a decrease in demand, right? For 5% or 3% of decrease in demand, and
इंक्रीज इन प्राइस कितना था 20%. सो नॉट ओनली आईफोन, मैंने ऐसे एग्जाम्पल दिया था आईफोन का. यू कैन सी इन मैनी प्रोडक्ट लाइक इन गोल्ड ऑल्सो, राइट? सो इन गोल्ड ऑल्सो व्हाट हैपन, प्राइस इज इंक्रीजिंग, राइट? इवन आफ्टर प्राइस इज इंक्रीजिंग, डिमांड इज नॉट डिक्रीजिंग एट द सेम लेवल एज द इंक्रीज इन प्राइस, राइट? और हमने एग्जाम्पल दिया था, कुछ कुछ एग्जाम्पल. प्रोडक्ट देखो और उसका क्या नेचर है आप देखिए. जैसे फॉर एग्जांपल दिवाली सेल में फ्रीज, वॉशिंग मशीन और एयर प्यूरिफायर. सो आई हैव बॉट 2 एयर प्यूरिफायर दिस टाइम. Amazon बिग बिलियन डे जो भी सेल है, सो उस सेल में मैंने 2 फिलिप्स का एयर प्यूरिफायर खरीदा बिकॉज ए, और एलेक्सा जो इको है, गिफ्ट देने के लिए इको खरीदा, राइट? व्हाई? Because all these consumer durable, right? When there is a little bit of change in price or decrease in price, the demand increases, right? And that's why producer or business decision maker, they take the decision accordingly to increase the demand, right? They just decrease the price by a little bit, right? अगर 40,000 का एक product है, they will decrease it by maybe 7,000 or 10,000 का cashback, राइट? और मे बी एक प्रोडक्ट अगर 5,000 का है, उनमें आपने दे दिया 700 और 1,000 रुपीज का कैशबैक और 1,000 रुपीज का डिस्काउंट, राइट? एंड दैट 10% ऑफ डिक्रीज इन प्राइस lead to a higher increase in demand, right? That means it is a highly elastic, right? एंड जैसे हमने बोला आईफोन का एग्जांपल दिया और गोल्ड का एग्जांपल दिया कि प्राइस अगर ज्यादा भी डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, बट जो डिमांड है वो उतना इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है. दैट मीन्स इट इज लेस देन इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक, राइट? रिलेटिवली इन इलास्टिक का मतलब है इट इज इन इलास्टिक. व्हाई वी आर सेइंग इन इलास्टिक? इन इलास्टिक का मतलब ये नहीं है कि इट विल नॉट चेंज, right? It is elastic, but relatively inelastic, right? In relation to other elastic demand, it is not elastic. That means relatively inelastic, right? जैसे हमने Uber का example दिया था, because in Uber also there is relatively inelastic demand. That's why when there is a price surge, right? When there is a high demand, maybe during festivals, right? Now if you book a Uber during Diwali or any other occasion like Christmas or during weekends also, at weekend also, the price of Uber जो आपका नॉर्मल रेट है उससे इंक्रीज हो जाती है. So why it happens? Because they know that even if price increases, will not decrease at the same, right? And by increasing the price, the producer or the business decision makers, right? Uber का जो owner है और business strategy बनाते हैं, they can take the decision that yes, even after increasing the price, our demand will not decrease at the same proportion, and it will definitely decrease तो थोड़ा होगा, but कम decrease होगा. That means even after little bit of decrease in demand, the producer or the business owner can still earn profit. Profit कैसे बना सकते हैं? Because of increasing price. Because we know that profit can be increased by increasing the price or increasing the quantity. So here, when here is the demand is relatively inelastic, right? Or highly inelastic. So in that condition, the producer or the business decision maker, they earn profit not by increasing the quantity but increasing the price. Similarly, product which have high elasticity or which are relatively elastic, right? That means in such cases, the business decision maker or जो business strategist है, so they decrease the price a little bit to increase the quantity demanded, right? So here in case of elastic demand, so in that case, the producer earn profit by increasing the quantity, not by increasing the price. Understood? I hope I am clear. Yes, yes. Because सिर्फ हमें फॉर्मूला या डायग्राम याद करना ही जरूरी नहीं, बट हाउ इट्स एप्लीकेबिलिटी इज आल्सो इम्पोर्टेंट, राइट? सो व्हाई elasticity is needed to be studied, and why how elasticity of demand is applied in
in real life, in real business decision making. Right now, ये क्या हो रहा है? एक मिनट, हाँ, आत्मिक बंसल का पिन हो गया. ऑल राइट. So today we were going to study how this price elasticity demand is calculated, right? How there are different methods to calculate or measure price elasticity of demand. आई थिंक मैंने आप लोगों को ये वाला पीपीटी शेयर भी नहीं किया है, राइट? मैंने फर्स्ट यूनिट का भेजा है, सेकेंड यूनिट का नहीं भेजा. मैं भी भेज देती हूँ. अभी आप लोग जो भी मैं पीपीटी भेजूंगी पढ़ना डेफिनेटली. अगर कुछ चेंजेस होगी ना, मैं बाद में चेंज करके एग्जाम के पहले एक बार मैं फिर से देख लूंगी. अगर कोई मिस्टेक है, जैसे फर्स्ट यूनिट में एक स्लाइड में एक मिस्टेक था, वो मैंने कर दिया है. आई विल शेयर इट. एक बार जल्दी जल्दी चेंज हो जाती है, अदरवाइज स्लो ही हो रहा है. Okay, so this is inelastic demand, right? Or relatively inelastic. Relatively inelastic हम क्यों बोलते हैं? Because ऐसा भी नहीं है कि elastic नहीं है, right? There is little bit of elasticity or there is little bit of response, but yes, the change in price is high and the change in quantity is less than the change in price, right? So that's why we are saying it. We call it as relatively inelastic, right? So that means अगर price, अगर for example यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, क्योंकि importance of price elastic demand में ये वाला मैं एक point है कि why price elastic demand is so important in business decision making. So आप एक ध्यान से देखना डायग्राम को, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि changes price is high, right? यहाँ पे अभी मैंने नहीं बोला है कि इंक्रीज है या डिक्रीज है. अभी आप बताइए, इसमें अगर कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट, इज इनइलास्टिक, राइट? सो द प्रोड्यूसर शुड इंक्रीज द प्राइस और डिक्रीज द प्राइस. यस मैम, एक बार रिपीट करना. ओके, सो आप डायग्राम देखो, राइट? डायग्राम यू कैन सी. सो हियर वी कैन से दैट the price change is higher than the change in demand, right? And that's why demand curve is steeper. Demand curve is steeper, right? So in such case, so we can say that it is inelastic demand or relatively inelastic demand. So the producer of this kind of product should increase their price or decrease their price to maximize the profit. Profit बढ़ाने के लिए क्या strategy होना चाहिए? Increase the price. Increase the price. Why? Ma'am, because people will still buy the product because the demand is inelastic. Great. So here in such cases, why producer will increase the demand, increase the price? Producer will increase the price because they know even after increasing the price, people will still buy their product, right? That means even if there is 50% increase in the price, there will be only 20% decrease in the demand, right? That means there is still people who are buying their product, and the decrease in the consumption or decrease in the purchase by the consumer has not changed so much, right? So producer of inelastic demand, the product inelastic demand product, they will always increase the price to increase their profit, because यहाँ पे डिस्काउंट देखिए कुछ फायदा नहीं है. अगर डिस्काउंट होता,
राइट अगर फॉर एग्जांपल डिक्रीज करते प्राइस अगर डिक्रीज करते P2 से P1 फॉर एग्जांपल द इनिशियल प्राइस वाज मे बी 2000 राइट 2000 से 2000 से 1000 दैट मींस ऑलमोस्ट 50% उन्होंने प्राइस चेंज कर